Hello students, the question is write 2 points of difference between an interference pattern and diffraction pattern. So the problem is based on the topic wave optics and in particular the difference between interference and the diffraction pattern. So here are the 4 differences out of which you can write any 2. So the first difference is the interference pattern has a number of equally spaced bright and dark bands. It has equally spaced bright and dark bands. While the diffraction pattern has a central bright maximum, it has a central bright maximum in the case of diffraction pattern, which is twice as wide as the other maxima. It means that there is a difference between the width of the maxima in the case of diffraction pattern, whereas in the case of the interference pattern, these are equally spaced. The bright bands and the dark bands, these are equally spaced. Second point, interference pattern is obtained by superposing two waves originating from two narrow slits, while the diffraction pattern is a superposition of continuous family of waves originating from each point on a single slit. It means that the superposition principle is due to two slits in the case of interference pattern, whereas in the case of the diffraction pattern, it is only due to the single slit, the waves originating from the different points of the single slit. In the case, the maxima in interference pattern is obtained at an angle of lambda by a, while first minima is obtained at the same angle lambda by a for the diffraction pattern. It means that at this particular angle lambda by a, we get the maxima in the case of interference pattern, whereas the same angle lambda upon a, we get the first minima in the case of diffraction pattern. So that's the difference. Then the final difference is that in the interference pattern, the intensity of bright fringes remains same. It means that all the bright fringes, they have the same intensity. Whereas for the diffraction pattern, the intensity falls off as we go to the successive maxima. For the successive maxima, when we move away from the central maxima on either side, then we get the different intensity levels, the lower intensity level, the fading, basically the decrement of the brightness. So these are the 4 differences, key differences. तो यहाँ पे इस पर्टिकुलर प्रॉब्लम में हमसे 2 डिफरेंसेस पूछे गए हैं इंटरफेरेंस पैटर्न और डिफ्रैक्शन पैटर्न में. हमने 4 जो है डिफरेंसेस यहाँ पे लिखे हैं. इनमें से कोई भी डिफरेंस आप 2 चूज करके लिख सकते हैं. पहला बताया गया है कि इंटरफेरेंस पैटर्न के केस में हमें इक्वली स्पेस्ड ब्राइट और डार्क बैंड्स मिलते हैं, जबकि अगर हम बात करें डिफ्रैक्शन पैटर्न में तो हमें एक सेंट्रल ब्राइट मैक्सिमम मिलता है जो कि बाकी मैक्सिमम के रेस्पेक्ट में, बाकी मैक्सिमा के रेस्पेक्ट में ट्वाइस विड्थ का होता है, डबल विड्थ का होता है. दूसरे पॉइंट में कहा गया है कि इंटरफेरेंस पैटर्न में 2 स्लिट्स की रिक्वायरमेंट होती है. उन स्लिट से जो वेव्स ओरिजिनेट होती हैं उनके सुपरपोजिशन से हमें इंटरफेरेंस पैटर्न मिलता है, अल्टरनेट डार्क और ब्राइट बैंड्स मिलते हैं. जबकि अगर हम बात करें डिफ्रैक्शन पैटर्न की, तो डिफ्रैक्शन पैटर्न में एक सिंगल स्लिट के अलग अलग पॉइंट से वेव्स, कंटिन्यूस फैमिली ऑफ वेव्स ओरिजिनेट होती हैं और उनके सुपरपोजिशन से हमें जो है डिफ्रैक्शन पैटर्न मिलता है. थर्ड पॉइंट में कहा गया है कि हमें लैम्डा बाय ए एंगल पे इंटरफेरेंस पैटर्न के केस में मैक्सिमा मिलता है, वेरएज इसी एंगल पे अगर हम बात करें तो हमें फर्स्ट मिनिमा मिलता है इन द केस ऑफ द डिफ्रैक्शन पैटर्न. फोर्थ पॉइंट में कहा गया है कि जो इंटेंसिटी होती है ब्राइट फ्रिंजेस की वो सेम रहती है अलग अलग फ्रिंजेस के, ब्राइट फ्रिंजेस के लिए. लेकिन हम अगर बात करते हैं डिफ्रैक्शन पैटर्न की, तो जैसे ही हम सेंट्रल जो मैक्सिमा है उससे जो सक्सेसिव मैक्सिमास पे हम जाते हैं, अलग अलग मैक्सिमा पे दोनों साइड्स में, ईदर साइड्स में, तो हम देखते हैं कि वो एक तरह से उनकी ब्राइटनेस कम होती चली जाती है. So these are the 4 key points which I have discussed. Hope you understand the explanation. Thank you.